So dear friends, today we will be starting new channel, that is Lung channel. But before discussing the Lung channel, would like to discuss something, some general thing. हम कुछ पहले थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करेंगे. So in the TCM, some information are very basic, and if we are aware, then it's good. The TCM is when we are doing any diagnosis, when we are doing identification of any pattern, like how to know, कैसे पहचाने, लंग क्या ढूंढे, लंग की डिफिशियंसी, हार्ट की डिफिशियंसी. ओके. और what exactly we do in the acupuncture. So whenever we are talking about the patterns, so acupuncture mainly working on the pattern discussion, pattern identification. जब भी हम पैटर्न का आइडेंटिफाई करते हैं, so it based on 8 principles. हम 8 चीजें देखते हैं for any organs, like suppose for any organ we see 8 things, 8 principles. So number 1 we see, like we're telling, interior heat in the stomach, okay, or the external wind attack on the lung. So sometimes we are telling external, sometimes we are telling interior. So the 8 principle of TCM, we see whether the problem is interior or exterior. Like in the previous class, we have discussed interior heat in the stomach. Stomach में जब गर्मी बढ़ जाती है, if the person eating lots of tobacco or the person eating lots of spicy food. Exterior, sometimes we can see some bacteria attacking from the outside. Exterior. So in the TCM, in the 8 principle, first we see whether the disease interior or exterior. कि अंदर से पैदा हो रही है या बाहर से आक्रमण करके पैदा हो रही है. Whether disease is creating inside or coming from the outside. Then we see many person ask, okay, can we do moxibustion? Can we do this and that? So we see whether the disease having cold nature or the heat nature. If the cold nature, we can do moxibustion. If the heat nature, then we cannot do moxibustion. जैसे कि फीवर है, हीट डिसीज है, भी हम moxibustion नहीं कर सकते. We can't do moxibustion in the fever. लेकिन ठंड लग गई है, we can do moxibustion. है ना? So we see whether the disease having cold nature or the heat nature. Like someone eating ice cream, suffering with a cold stomach. Someone eating lots of spicy food or drinking alcohol, getting heat in the stomach.
Then accordingly, we are making treatment plan. Then we find out whether the disease having deficient nature or excessive nature, deficiency or the excessive condition. जैसे हमने बोला स्टमक की डेफिशिएंसी, कि थकान लगती है, कमजोरी लगती है, फॉर एनी लाइक स्टमक की डेफिशिएंसी, लंग की डेफिशिएंसी, हार्ट की डेफिशिएंसी. ज्योतिका जी बड़े दिनों के बाद चेहरा दिख रहा है आज आपका. सिर्फ नाम ही नाम दिखता है. ओके ओके फाइन, चलिए. सो डेफिशिएंसी, डिसीज का नेचर डेफिशिएंट है कि एक्सेसिव है. जैसे अभी हम लंग की बात करेंगे, वी आर स्टार्टिंग लंग चैप्टर. इन द लंग चैप्टर विल सी लंग की डेफिशिएंसी, and sometimes we can see excessive disease. So in the eighth principle, we see the nature of disease is deficiency or the excess. That's why we are discussing, okay, in the stomach 3 pattern or the pattern of deficiency. Then remaining 5-6 pattern of the pattern of excessive condition. क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? सदानंद जी को नहीं आ रही आवाज मेरी? ठीक आ रही है ना आवाज? वो साउंड इज क्लियर ना? Okay. So then next is we find out who is suffering. Yin organ is suffering or the yang organ is suffering. So these are called 8 principles in TCM. Very important, very basic foundational aspect of the TCM. Okay. Then whenever we are making any diagnosis, be like, for example, we are making diagnosis, interior heat in stomach. Like in the exterior. The external wind attack on lung. ऐसे हम बनाते diagnosis. Then we are telling cold इन्वेडिंग स्टमक, कोल्ड स्टमक पर आक्रमण कर रहा है. ओके. और वी आर टेलिंग लाइक हीट, स्टमक हीट और स्टमक फायर, और वी कैन टेल हार्ट हीट, हार्ट फायर. देन डेफिशिएंसी, वी आर टेलिंग लाइक फॉर एग्जांपल स्टमक की डेफिशिएंसी, लंग की डेफिशिएंसी. Okay, in this way. Then excessive. In the excessive also, we have seen many excessive patterns. In the stomach also, we have seen 5 to 6 excessive patterns. Like we have seen stomach fire, stomach flame fire, then retention of food in the stomach. These all are excessive patterns. So disease is having excessive nature. That's why we sedate. तो हमने देखा स्टमक के अंदर हीट बढ़ जाना, इंटीरियर हीट इन द स्टमक, लंग के ऊपर एक्सटर्नल अटैक होना. फिर हमने कोल्ड का उदाहरण दिया, कोल्ड स्टमक पर आक्रमण करना, स्टमक में हीट बढ़ जाना. देन डेफिशिएंसी के लिए स्टमक की डेफिशिएंसी. In this way, we have to think for these 8 things. Then whether the disease in the yin organ or the yang organ. Okay, sometimes disease in the yin organ, like maybe in the lung, maybe in the heart, like lung chi deficiency, heart chi deficiency. Sometimes disease will be in the yang organ, like stomach, large intestine, urinary bladder. So this is the 8 basic principles of TCM.
With the help of this we do pattern identification. ये हमारे टीसीएम के 8 मुख्य प्रिंसिपल हैं. So we see whether the problem is coming from the internal habits or problem is coming from the outside, or because of the cold, because of the heat, because of the deficiency, because of the excessive, and where is it happening. कि आखिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अंदर से हो रही है, बाहर से हो रही है, ठंड से हो रही है, गर्मी से हो रही है, डेफिशिएंसी एक्सेसिव हो रही है, किस में हो रही है, यिन में हो रही है, यांग में हो रही है. उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. Okay. So many times patient is having some symptom, like patient is telling you symptoms. I will give one example. Patient is telling you, I am having poor appetite. Okay, spleen की deficiency, spleen कमजोर है. I feel poor appetite. And in the lung we will be discussing, अभी हम lung की बात कर रहे हैं. When the lung chi is deficient, person will be having shortness of breath और weak voice. इसकी बात की जाएगी अभी. This topic will be discussed just now because we have started lung. We will be starting lung. So, person is telling I am having poor appetite, okay, spleen chi deficiency, I am having weak voice, shortness of the breath, मेरी आवाज कमजोर है, सांस फूलती है, लंग की डेफिशिएंसी. तो ऐसे हम लक्षणों के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं और देन अकॉर्डिंगली वी मेक द ट्रीटमेंट प्लानिंग. ओके, फिर हम ट्रीटमेंट प्लानिंग कर लेते हैं. So in this way the lots of treatment pattern. Now second information which I want to tell you, at a time the multiple pattern might present together. एक साथ सेवरल पैटर्न हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक पेशेंट को एक ही पैटर्न हो गया. Okay, for example, let's take the liver. Someone is having lots of emotional suppression. Due to the emotional suppression, getting liver chi stagnation. इमोशनल सप्रेशन के कारण कि लिवर ची स्टैग्नेंट हो रही है. Then slowly we can see there is a high BP is coming after some time. So higher BP, liver fire, or too much anger, very aggressive person, liver fire. So liver chi stagnation and the liver fire might present together. यानी एक पैटर्न ही एक बार में होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ना. At a time there are two pattern might present. For example, I will tell you polycystic ovary, polycystic ovarian syndrome, PCOS, polycystic ovarian syndrome. So we are telling liver chi stagnation plus कि liver chi stagnation हुआ due to the emotional suppression, due to the some causes. There is a liver chi stagnation, then there is a formation of the cyst, so liver blood stasis together. एक साथ लिवर के दो पैटर्न प्रेजेंट है, liver chi stagnation and liver blood stasis. So at a time there might be several pattern might present. Now it is not necessary
If pattern present in the liver, then all the pattern will be in the liver only. Pattern might be anywhere. ऐसा नहीं है कि अभी हम लिवर की बात कर रहे हैं कि हमने बोला लिवर की स्टेग्नेशन होगा, बाद में बहुत बीपी बढ़ जाएगा, लिवर फायर हो जाएगी, तो लिवर में रहेगा नहीं, जंप भी करेगा इधर उधर. फॉर एग्जाम्पल, someone is having very high BP, palpitation, okay, might be having liver fire as well as heart fire combined together. It means the two pattern also might present, कि दो पैटर्न भी हो सकते हैं. Let's take another example. Someone is having spleen deficiency. We know if the spleen deficiency is there, किसी को spleen deficiency है. If the spleen deficiency is there, then we know there is a formation of the flame, and there we already know there are many causes of the spleen deficiency. Person eating lots of raw salad, drinking cold drinks, having lots of worry, overthinking, or coming in the contact of cold surface or rainy, cloudy or damp weather, ऐसे कई कारण होते हैं जिससे स्प्लीन ची कमजोर हो जाती है. जैसे ज्यादा चिंता करने से, तनाव करने से, बादल, जब आसमान में बादल होते हैं, बहुत पानी बरसता है, कोई व्यक्ति गीले मकान में रहता है, ठंडी धरती पर सो जाता है, स्प्लीन ची की डेफिशिएंसी हो सकती है, बनी रहती है सालों साल. Now this is for many years, even for throughout the life. And maybe after some year, this person is suffering with the UTI, urinary tract infection, urinary infection, urinary tract infection. Maybe it means developed damp heat in bladder. So you can see there are two patterns present together: spleen deficiency and damp heat in the bladder. Damp heat in the bladder create UTI. You will learn this in the discussion of bladder. जब हम ब्लडर का डिस्कशन करेंगे तब आप ये सीखोगे. What I want to tell you, two pattern might present together. दो पैटर्न, चाहे वो यिन यांग हो, लंग लार्ज इंटेस्टाइन टू might present with the spleen. We have seen urinary bladder combination might present. तो कुछ भी present हो सकता है ना. So it is not necessary that only one pattern will present all the time. Okay, so there are two pattern might present. दो पैटर्न प्रेजेंट हो सकते हैं. गॉट इट. होते हैं ना, डेफिशिएंसी एक्सेस पैटर्न टुगेदर होते हैं. कैसे? लाइक समवन इज हैविंग स्प्लीन डेफिशिएंसी, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लॉट्स ऑफ फ्लेम. स्प्लीन की डेफिशिएंसी हुई, व्हाट इज द रिजल्ट? फॉर्मेशन ऑफ द फ्लेम, लॉट्स ऑफ डैम्पनेस, collection, accumulation. Now this will be responsible for a damp heat somewhere. डैम्पनेस तैयार है, शरीर स्प्लीन कमजोर है, डैम्पनेस तैयार है. किसकी, किसका इंतजार है? हीट का इंतजार है. बस. गॉट इट. डैम्पनेस बनाने के लिए तो स्प्लीन का कमजोर होना अत्यावश्यक है. बिना स्प्लीन की कमजोरी के डैम्पनेस बनेगी नहीं. सो देन wherever this dampness will go, it will combine
with some other thing. तो हमने बात की, हम जब टीसीएम की पढ़ाई करते हैं तो हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए, राइट? स्पेशली पैटर्न. And regarding the organs, one basic thing also I would like to tell you. In the 5 element cycle, we know liver, heart, spleen, lung, kidney. So we should know liver is storehouse of blood. Remember this sentence. This is the as per TCM. लिवर ब्लड को स्टोर करता है. लिवर स्टोर ब्लड. गॉट इट? हार्ट, heart govern blood, where we need to send the blood, in which part we have to send the blood. This is governed by heart. Okay, so liver stores, heart governs blood. If the liver blood deficiency, it might create oligomenorrhea. If the heart blood deficiency, it also might create oligomenorrhea. लिवर ब्लड की कमी है, इससे भी पीरियड कम हो जाने की संभावना है. हार्ट की ऊर्जा कम है, केवल ब्लड इन हार्ट की ऊर्जा कम है, तब भी ब्लीडिंग प्रभावित हो सकती है. बिकॉज हार्ट गवर्न द ब्लड. इट इज नॉट नेसेसरी हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी. हार्ट कमजोर है, किसी हार्ट की डेफिशिएंसी, हार्ट यंग डेफिशिएंसी, एनी टाइप ऑफ द हार्ट वीकनेस, एनी टाइप ऑफ द हार्ट वीकनेस. बिकॉज हार्ट गवर्न द ब्लड, हार्ट इज नॉट सेंडिंग द blood. So when any female is menstruating very properly, normally, when any female will having good menstruation, when the liver blood is good and the heart function is good. Got it? Because heart govern blood. Then regarding the lung, lung is also governor, but lung is the governor of chi. लंग हमारी ची का गवर्नर है. गॉट इट? स्प्लीन गवर्न्स. स्प्लीन क्या गवर्न्स करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. स्प्लीन का काम है फूड को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसपोर्ट करना. एंड बिकॉज किडनी is the place of essence. So kidney governs. किडनी क्या गवर्न्स करती है? our reproduction. है ना, इस बात का ध्यान रखना. One more information here I will tell you. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन. if वो पता है आपको, जरूरत नहीं है, एक चीज बता देता हूं. रिगार्डिंग लंग एक चीज बताता हूं. लंग इज द गवर्नर ऑफ ची. लंग इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग बॉडी फ्लूइड. लेकिन इसकी बात अभी थोड़ी देर में फिर से की जाएगी, सो डोंट वरी फॉर दैट.
ये कौन सी बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, जिसके बेस पर टीसीएम काम करता है, राइट। और कुछ चीजें तो पता ही है आपको, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं जब डिस्कशन हो रहा है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। लिवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग एंड किडनी। ओके, सो एवरी organ having connection with one tissue. Now remember, liver is connected with tendons, लिवर का संबंध टेंडन से है। हार्ट इज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, दीज कॉल्ड टिश्यू, इन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू। स्प्लीन कनेक्टेड विद मसल, लंग विद स्किन एंड किडनी विद बोन। वी ऑलरेडी नो दिस, ये हमको सब पता है। If the person is having skin problem, you have to think for lung. If the person is having muscle weakness, think for spleen. Blood vessels connect to the heart, tendon connect to the liver. तो अगर जॉइंट की प्रॉब्लम है तो लिवर को देखो, लिवर इज हैविंग कनेक्शन विद द टेंडन, टेंडन आर फाउंड इन द जॉइंट्स। Okay, these are the tissues. So liver is, the tissue of the liver is tendon. ये जितने भी 5 एलिमेंट्स है ना, all the 5 elements like liver, heart, spleen, lung and kidney। जैसे एक चीज बताओ कि एक कुकर गर्म है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हाथ लगा के चल जाएगा ना पता, ऐसे करके पता चलेगा कि नहीं चलेगा? कि टेम्पर थर्मामीटर से टेम्परेचर नापना पड़ेगा, टॉर्च से पता चल जाएगा, टॉर्च से कुकर गर्म है कि नहीं है। If the cooker is hot or not, how we'll find? We can touch and find. So what I want to tell you, why I'm giving this example, these all organs are showing their strength, for that they are doing some external manifestation। कि ये जितने ऑर्गन है ना, जैसे लिवर है, लिवर दिखता है नाखून में, किसमें दिखता है? नाखून में। So the external manifestation of the liver is happening in the nails. This is external manifestation. How they represent? Liver is represented through nails। नाखून देखो भाई, नाखून टूट जाते हैं, द नेल्स आर ब्रेकिंग वेरी इजीली। Maybe liver is weak, liver blood deficient, some liver pattern. Then, in the same way, lung is represented by body hair. Kidney is represented by scalp hair, है ना? स्काल्प हेयर सिर के बाल हैं, लंबे घने काले। किडनी
sense बढ़िया है. You are having good kidney sense. Spleen reflected through lips. Lips, see the lips. Or heart is reflecting through the complexion. Complexion. तो अगर किडनी सेंस कम है तो बिग लगा लो, तो किडनी सेंस बढ़ जाएगा. स्प्लीन कमजोर है तो लिपस्टिक लगा लो, तो ओठ एकदम गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे. आजकल तो अलग अलग कलर के नाखून भी आते हैं ना. जैसी साड़ी वैसे नाखून पहन लो. So you have arrangement of all the five elements. You can. So lips are showing spleen. Spleen. Ajay, actually, I will tell you one thing. Ajay ji not able to understand Hindi, but this he understood very easily. What Ajay ji? So now, spleen is reflected through the lips. Every female want to tell everyone that my spleen is very stronger. My hormones are very much balanced because spleen having connection with the hormones. My body tone is very tight. So because spleen is having connection with the body tone and tightness. So they are putting red color on the lips. Nowadays very beautiful bigs coming. Hair bigs. Long hair, short hair, curly hair. Okay. It's very difficult to find out that it is the real hair or the duplicate hair. Okay. लिप्स आते हैं क्या बाजार में नकली? लिप्स भी आते हैं क्या? आते हो नहीं आते क्या? ऐसे चिपका लो यहाँ पर ऐसे ऐसे. नहीं आते क्या? ओके. So the five elements, this is the external manifestation of the five element. We will look at the lips. We will look at the complexion of the person, how the person look like. And accordingly we will able to find out. अब देखो अब डायग्नोसिस कैसे बनती है वो देखिए. One person is having weak muscle प्लस एक व्यक्ति की मसल वीक है. पेल लिप्स एंड पुअर एपेटाइट. विच एलिमेंट इज कनेक्टेड? कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड? अच्छा बोटॉक्स करते हैं लिप्स. स्प्लीन इसका. स्प्लीन इज कनेक्टेड. वेरी गुड. ओके. So in this way, we will find out, we are doing some diagnosis accordingly. Okay. फिर हम सेंस ऑर्गन तो जानते ही हैं. वन मोर एड ऑन इफ वी कैन डू. एक एड ऑन और भी डाल सकते हो फॉर मेकिंग योर डायग्नोसिस वेरी परफेक्ट. एड द सेंस ऑर्गन. So you can ask the patient, look at the eyes for liver. Eyes represent liver. Look at the tongue for heart. जीभ को देख लो हार्ट के लिए. Look at the mouth, whether there is a smell from the mouth, some problem in the mouth for spleen.
Look at the nose, whether person is having blocked nose or deviated septum for lung. And with the help, look at the ear for kidney. यानी आंखें देख लो, आंखों से पता चलता है लीवर कैसा है, टंग से हार्ट पता चलता है, मुंह में बदबू आ रही है, बांस आ रही है, स्प्लीन पता चलता है, नाक बंद है, नाक में कुछ प्रॉब्लम है, लंग पता चलता है, किडनी कान से पता चलती है, बड़े बड़े कान है किडनी सेंस ज्यादा है, छोटे छोटे कान है किडनी सेंस कम है. So accordingly we can make our diagnosis. Okay. So in this way we can have multiple five elements. Even we can do the add-on of the emotions, or accordingly we can make the proper diagnosis. Got it? So now this was the very basic things about how we work with the patterns. Now let's start lung channel. अब हम लंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल लंग. कोविड के समय जहां देखो लंग लंग का ही डिस्कशन हो रहा था, राइट? So many people already are aware with a lots of things about the lungs, but as per the TCM, we are having some different concept. Okay. So the first thing I told you, lungs are governor of chi. लंग ऊर्जा के गवर्नर है. If the person is having chi deficiency, if there is a not proper formation of the chi in the body, we might have to think about the lung. हमें लंग के बारे में सोचना पड़ सकता है, क्योंकि लंग का संबंध है हमारे chi के साथ, ऊर्जा के साथ. Like we are eating the food, then we are inhaling the air, then only there is a formation of the chi. एक the food chi and the air chi. बिना लंग के वो chi नहीं बनेगी जो बनाना है. So lung are governor of chi. Okay. The second very important, lung are very deeply connected with the heart and they affect each other. Many time person is having problem with the lung and we are thinking the problem he is suffering with a heart condition. And many time person is having problem with the heart, we think the person is suffering with the lung problem. कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सांस फूलती है, डॉक्टर उनको इनहेलर दे देते हैं. There are many persons, they are suffering with a cardiac problem. They have done some mitral valve surgery or some angioplasty. They are having weakness of the heart. So they are walking and they are getting breathlessness. Then doctor gave inhaler. Inhaler is dilating the bronchi. Okay. They affect each other also. If the person is suffering with a lung problem, it will affect the heart. If the person is suffering with a heart problem, it will affect the lungs. ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि लंग की ऊर्जा भी हार्ट को प्रभावित करती है. अगर लंग इफ द लंग्स आर वीक ना, हार्ट फंक्शनिंग विल बी अफेक्टेड. हार्ट की फंक्शनिंग भी अफेक्टेड हो जाएंगी. Now I am telling you the third point, next point, very important point. You should remember. Lung having two work.
Lung is sending chi and fluid downward and outward. लंग क्या करता है? ची और फ्लूइड को नीचे भेजता है और बाहर की ओर भेजता है। ये लंग का काम है। लंग एक पानी की टंकी की तरह जो छत पे रखी है। लंग लाइक ए वाटर टैंक on the third floor or the fifth floor or the top floor. The water tank is that is the lung. We are eating the food and there is a formation of the chi, the formation of the fluid that going to the lung. The lung is sending down all around everywhere. For example, you have taken the food, you have eaten the food, you have drink the water, you are drinking the juices. Ultimately, you are having lots of fluid in the body. That fluid is deposited in the top floor, in the lung. Then, wherever we need the fluid, it goes through the lung. तो लंग का काम है कि नीचे पानी को भेजना, नीचे ऊर्जा को भेजना और बाहर की तरफ भेजना। लंग इज लाइक स्प्रे होता है ना, स्प्रे बोतल। जैसे व्हेन वी आर गोइंग फॉर द व्हेन जैसे स्प्रे करके हम कुछ भी डालते हैं, वार सॉप एंड ही इज पुटिंग द वाटर लाइक दिस स्प्रे। हाँ, स्प्रिंकलर, यस। सो लंग इज स्प्रेइंग the layer of fluid below the skin everywhere. लंग का काम है हमारे संपूर्ण शरीर में चमड़ी के नीचे पानी की एक लेयर को स्प्रे करना। सो लंग इज स्प्रेडिंग body fluid each and every part of the body just below the skin. Lung is also sending that body fluid downward. लंग के दो काम है, नीचे भेजो, बाहर भेजो, नीचे भेजो, बाहर भेजो। Send down, that is called descending of the chi and descending of the fluid. And outward means on the outer layer. So when the lung become weak, then what will happen? It will not able to send the chi and fluid outward. It will not able to send the chi and fluid downward. Then the problem will start. अगर लंग कमजोर होते हैं तो प्रॉब्लम इसीलिए स्टार्ट होती है क्योंकि लंग ऊर्जा को नीचे नहीं भेज पाते, लंग ऊर्जा को चारों तरफ नहीं भेज पाते। तो इसे हम टीसीएम की लैंग्वेज में बोलते हैं लंग इज हैविंग टू फंक्शंस। नंबर वन, डिसेंडिंग मीन्स डाउनवर्ड एंड डिस्पर्सिंग मीन्स आउटवर्ड। इसके दो काम है, डिसेंड करना नीचे भेजना, डिस्पर्स करना चारों तरफ भेजना। If the lung is not sending fluid downward, तो फ्लूइड अगर पानी की टंकी में से पानी नीचे नहीं जाएगा तो कहां भरेगा? ऊपर ही छत पे भर जाएगा? भरेगा कि नहीं भरेगा? If the water is not coming from down from the top floor to the downward, it will just accumulate there. That's why person is suffering with the problem of lung
If the lung is not able to send the chi downward, fluid downward, outward, then swelling in the upper part, swelling around the eyes, swelling below the eyes, swelling on the face, swelling around the in this part. And if we are not controlling it, then this swelling will spread throughout the body. जैसे आपने ऊपर की टंकी में पानी फैल रहा है, पहले छत पे भरेगा, नहीं किया तो पूरे घर में भर जाएगा, हर जगह भर जाएगा, धीरे धीरे फैल जाएगा फिर तो. So now remember this thing, lung are very important for this purpose. Okay. If the lung is not able to send the chi down, like you just can imagine, एक फीमेल बच्चे को दूध पिलाती है. द फीमेल इज फीडिंग द चाइल्ड. If the female is having lots of milk in the breast, but child is not present that time, she will feel lots of tightness, heaviness in the chest or not. एक फीमेल को के ब्रेस्ट में दूध आ गया है, लेकिन बच्चा भी पास में नहीं है पीने के लिए, तो उसके हैवीनेस लगेगी, टाइटनेस लगेगी चेस्ट में. In the same way, when the person is having lots of chi in the lung and lung is not able to send it downward, person feel lots of tightness in the chest. Chest tightness, chest congestion. Got it? So this is the very, very important. That's why we are telling it, very important line for the lungs. Lung regulate water passage. Water passage. लंग क्या करते हैं कि हमारे पानी को लंग नीचे किडनी को भेजते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को भेजते हैं. दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. आई विल टेल यू हाउ. क्या हुआ, लंग ने lung is sending fluid downward to the kidney. Lung is sending fluid downward to the bladder. Lung is sending fluid all around below the skin. Okay. So when the lung is sending, lung जब पानी किडनी को भेजते हैं, तो लंग कहते हैं किडनी से कि भैया इसको और अच्छी तरह से साफ कर दो. किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है छानना, छल. किडनी का काम है फिल्ट्रेशन. तो लंग किडनी को बोलते हैं देखो हम तुम्हें पानी दे रहे हैं, इसको बढ़िया से छान दो और फिर हमें वापस दे दो अच्छा शुद्ध ताजा छना हुआ, है ना, ताकि हम सब जगह फैला दें. So when the lung is giving water downward to the kidney, lung is telling to kidney do the proper filtration, and when you remove toxin and the fluid become very pure, give me back that pure fluid, so I will again send everywhere very refined fluid. ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रही है? तो लंग कहते हैं किडनी को कि देखो हम तुम्हें पानी दे रहे हैं, अच्छी तरह से छानो, फिर थोड़ा मुझे भी पीने के लिए दे दो, मैं भी प्यासा हूं, अभी जो मेरे पास पानी है उसे पी नहीं सकता, मुझे शुद्ध पानी चाहिए. और किडनी ने बोल दिया नहीं देंगे, तो क्या होगा? लंग प्यासा है कि किडनी से पानी देगी, और अगर किडनी ने लंग को पानी नहीं दिया तो लंग ड्राई हो जाएंगे. So lung is sending fluid downward to the kidney. Kidney is doing filtration.
the fluid become very good. आरओ फ्लूइड एकदम बढ़िया आरओ कर दिया उसके, कैंजन वाटर बना दिया, बढ़िया सा मिनरल वाटर बना दिया. The fluid is coming back to the lung. The lung is डिंगी. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया. तो लंग वो पानी नहीं पी सकता, लंग पानी की टंकी है. लेकिन वो पानी पी नहीं सकता अपना खुद का, उसको भी शुद्ध पानी चाहिए भाई. गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेन द लंग इज गेटिंग ड्राइनेस, लंग ड्राई कब होते हैं? जब किडनी पानी नहीं देगी तो लंग ड्राई होंगे ना. सिंपल बात है कि नहीं है? सपोज someone is suffering with a kidney deficiency. Someone is having kidney yang deficiency, kidney yin deficiency, kidney chi deficiency, any type of the deficiency, or there is a relationship of the lung and kidney is disturbed. Kidney is receiving the fluid but not sending back. Then lung will become dry. Okay, so in this way, lung are regulating the water passage. Lung giving water to the kidney, lung giving water to the urinary bladder, lung receiving back that pure water, then lung become happy. This is called good cycle. अब इसमें कोई भी बिगड़ गया, लंग ने बिगड़ गया, किडनी बिगड़ गई, सपोज लंग is not sending fluid downward, then there is a problem. Kidney is not giving back to the lung, then there is a problem. In both conditions there is a problem. या तो लंग देना बंद कर दो या किडनी का रिटर्न देना बंद कर दो, दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम है. That's why if the lung are disturbed, person might suffer with the urinary problems. Lungs are weak, it will affect the urinary bladder. So now we already know जब लंग पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, so when the lung distributing water all around everywhere, lung also sending distributing fluid below the skin, distribute fluid and distribute chi below skin. स्किन के नीचे भी लंग पानी भेजते हैं. If the lung is not sending fluid to the skin, what will happen with the skin? स्किन में पानी नहीं होगा, स्किन कैसी हो जाएगी? If there is no moisture in the skin, what will happen? So skin will become dry. So if you want very good skin, smooth skin, you have to work on lungs. So lung is sending fluid to the skin, even lung sending chi. That chi is called defensive chi. The lung is distributing the chi below the skin. That chi is called defensive chi or V की. इसी ऊर्जा को हम डिफेंसिव की कहते हैं या बी की कहते हैं. So this work is done by lung. That's why lung control skin and body hair.
सो दिस ऑल अरेंजमेंट इज फॉर प्रोटेक्शन। जैसे आप देखोगे कि भालू के कितने बड़े बड़े हेयर होते हैं, है ना, भालू के। तो हेयर का काम क्या है? हेयर के बहुत सारे काम है। हेयर्स आर गिविंग इन हेयर्स गिविंग यू प्रोटेक्शन। हेयर also making one barrier, so the direct cold will not enter in your body. So whenever any bacteria, any virus want to attack in the human body, first they have to fight here on the skin. So there is a defensive key, रोग प्रतिकारक। Defensive key means रोग प्रतिकारक शक्ति, which is created by lung. तो हमारी लंग ने ही हमारी इम्यूनिटी को पैदा किया है। If the person is having strong lungs, if the person do pranayama every day, if the person is doing some breathing exercises every day, lungs are stronger, then immunity will be very good. So Vichy mainly are on the outer side where we have skin, Vichy or the defensive key. बीचे वो अंदर नहीं है, जैसे लिवर इज मेड बाय मेनी सेल्स, स्प्लीन इज मेड बाय मेनी सेल्स। बीचे इज आउटसाइड। ओके, आउटसाइड। ओके, so lung is creating our defensive system. So whenever any bacteria or virus attacking, this attack will be considered as a attack on the lung. किसी भी बैक्टीरिया ने, वायरस ने, पैथोजन ने अगर हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमें सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, anything happening, this attack will be considered the attack on lung. Got it? Because the defensive key is the fighting system of the human body is created by lung here. Got it? The lots of arrangement has been done. तो अगर किसी की स्किन ड्राई है ना, ड्राई स्किन, the pathogen will enter very easily because there is a layering system is weak and the person is having poor lungs, poor defensive key. The penetration of the pathogen will be easier. तो अगर किसी के लंग कमजोर है, किसी का स्किन ड्राई है, किसी के डिफेंसिव की कमजोर है, तो आराम से उसे सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड हो जाएगा। Got it? So if the lung are stronger, whenever we need, they open the pores and they close the pores. Open the pore, start sweating. The pore. When lung are strong, system will be fell. Then we can't open the pores whenever we want. अगर लंग हमारे स्ट्रॉन्गर हैं, हमें पता है कि भाई अभी हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण किया है, पोर ओपन कर दो, स्वेटिंग कर दो, जाओ निकाल दो उसको बाहर। Do the sweating, open the pore, do the sweating. So this opening the pore, closing the pore, doing the sweating from the pores, these all are the part of defensive system only. Okay, जैसे किसी के वो ठंड लग रही है, कंबल अम्बल उड़ा दो थोड़ा सा, उसे पसीना आ जाए तो वो ठीक हो जाता है।
Even if you are someone is suffering with a fever and you are giving paracetamol and there is sweating, then we can see the fever is reducing. So this entire system, like opening the pore, closing the pore, starting with the sweat, then closing the pore and shivering, these all things are the arrangement of the lung. ये सारे lung के arrangement है. लेकिन कब इसके बारे में हम बात करेंगे, right? So right now what I want to tell you, skin is dry, there is a problem with the sweating, there is a problem with the immunity, the person is getting attack of cough and cold and some problem easily. These all things are connected with lungs. Yes, okay. Lungs are opening in the nose. So our nasal function, even the sense of smell sense is connected with the lungs. Someone is having loss of smell. आपको मालूम है कोविड-19 के आक्रमण के बाद कई लोगों की स्मेल चली गई, कई लोगों का टेस्ट चला गया. So if the person is having blocked nose or the deviated nasal septum or the problem with sneezing, so we have to think for the lung. मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? कई सारे लोग हैंग दिख रहे हैं जैसे. ओके आ रही है, चलो ठीक है, फाइन. So because lung is spreading the layer of fluid in the chi below the skin. Lung is having a deep connection with the skin, that we also know. Skin, the tissue coming in the lung. Very important information, very important thing given the TCM. When someone touches you and you feel the sensation that you feel because of the one corporeal soul, which is making you feel this. हमारी एक सोल होती है जिसे हम कॉर्पोरियल सोल कहते हैं या कहते हैं पो. The corporeal soul is residing in the lungs and it is everywhere wherever the lung energy. The lung energy below the skin or in the skin, the corporeal soul is here. We are touching here and we are feeling the sensation. हमने यहाँ पर टच किया है. क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, हाँ जी. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? ओके ओके ओके, गुड गुड. तो हमारे अंदर एक आत्मा, हम जानते हैं कि एज पर द एक्यूपंक्चर, एज पर द टीसीएम, we are having two type of soul. One is corporeal soul, one is etheric soul. Right now we are talking about the corporeal soul. So lung is house of corporeal soul or called Po. Po means corporeal soul. Because of this only we can feel physical sensation.
जैसे कि एक डेड बॉडी है, बिना सोल के वो डेड बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है. There is no any value of the dead body if soul is not there. Soul is very much important. जब सोल निकलती है ना, तो सोल निकलने के बाद हम उसका नाम भी नहीं लेते. जैसे कहते हैं मुकेश, सोल निकल गई तो हम बोलते हैं डेड बॉडी, मुकेश भी नहीं बोलते. So the real value is the value of soul. So the soul, the corporeal souls is in the lungs, making you feel the physical touch, physical sensation. Corporeal soul is having connection with the breathing and with all things. है ना? So in this way, lung is having connection. Lung is the residence of corporeal soul. This corporeal soul is having, when the corporeal soul is unhappy, if the corporeal soul is imbalanced, then person will be having sadness, grief. जब हमारी ये सोल डिस्टर्ब हो जाती है, ये सोल हमारे अंदर आई है हैप्पीनेस को फील करने के लिए. दिस सोल हैज कम टू फील जॉय, बट instead of joy, if the lungs are disturbed, then this corporeal soul is feeling the sadness, depression, grief, dukh. This sadness will affect your lungs and wherever the lung energy, like skin. Okay, so lung is the house of Po or the corporeal soul. If the corporeal soul is disturbed, person might be suffering with a breathing problem. इस व्यक्ति को breathing problem हो सकती है. Lung is having connection with the voice, आवाज, voice. Lungs govern the voice. So lung govern strength and the clarity. Lung से strength और clarity आती है. If the lung chi is good, the strength of the voice will be good, the clarity of the voice will be good. Otherwise, there will be weak voice or hoarseness, है ना, खरासपन, hoarseness of voice, खरखराट. If the lungs are stronger, they are creating very good jhongqi in the chest cavity. Jhongqi. Jhongqi is here. Jhongqi also called pectoral chi. This is a pectoral muscle. ये हमारी छाती की जो मसल होती है इसे पेक्टोरल मसल कहते हैं. The pectoral chi or the jhong chi, which is in the lung, which is in the chest cavity. If this is strong, if the lung is strong, jhong chi is strong, then there is a clarity of the voice, the strength of the voice will be good. The person can, people can listen you without mic. बिना माइक के लोग आपको सुन सकते हैं. आपकी आवाज में ताकत होगी. On the other side, if the lungs are weak,
then it will create weak voice, not clear voice, hoarseness of the voice, खरखराहटपन। तो लंग हमारी आवाज को नियंत्रित करते हैं। यस, तो ये कुछ चीजें थी, हमने लंग के बारे में बात की। और हम अब बाकी की बात, लंग के हमारे 3 पैटर्न हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं बस। डेफिशिएंट पैटर्न। So there are many patterns in the lungs. We will discuss all the patterns. Some patterns are deficient pattern, means lungs are weak and deficient. So mainly we will discuss 3 deficient patterns. Then there are many excessive patterns. The excessive pattern mainly due to attack. Due to attack of virus, due to attack of bacteria, due to attack of pathogen, we'll discuss. And some are the combined pattern. Means maybe lung is having connected lung and kidney, maybe lung and liver, maybe lung and spleen. So that is combined pattern. So first I will start from these deficient pattern. There are three very, very important deficient pattern which we'll discuss tomorrow onwards. Number 1, lung chi deficiency. Number 2, lung dryness. And number 3, lung yin deficiency. ये 3 पैटर्न से हम कल शुरुआत करेंगे। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न हैं। And after completion of this, we will discuss this. In the excessive pattern, we will able to understand all like सर्दी, खांसी, जुकाम, sneezing, छींके बीके, ये सब आ जाएगा हमारा. Then the combined pattern. Got it? So enough for today. Now we'll continue the session tomorrow. अब हम कल हमारी जो पेन होता है, पेन इन द पेक्टोरल मसल, it is not necessary that the problem of the lung deficiency. पेक्टोरल मसल तो यहाँ भी होती है, maybe some heart congestion, maybe lung congestion, maybe some other some mechanical physical injury, एक्सरसाइज करते से वर्कआउट करते समय हो गया ना। 22 के लिए हम आपको बताएंगे, इफ यू वांट टू मेक योर वॉइस स्ट्रांग you have to strengthen the lungs. So tomorrow you will understand that. जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं ना, the many singers, they are singing very nicely, but when they are reaching to the old age now, the many singers develop asthma because the overuse of the lungs creates some dryness of the lung or the lung insufficiency, and which causing chronic asthma. Many singers are taking abrak bhashma in the Ayurveda. Abrak. Okay. Abrak bhashma. That is for strengthening the lungs. So tomorrow we'll discussing this lung deficiency, lung dryness, lung indeficiency. और फिर हम इसके बाद हाँ, तो अगर अगर सांस के माध्यम से, अगर ब्रीदिंग के माध्यम से बैक्टीरिया ने इंटर किया तो वो भी लंग पर आक्रमण ही है। यस, राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो ब्रीदिंग से फिर कहाँ जाएंगे? लंग में ही जाएंगे। ओके, यस। बचपन से निमोनिया रहा है
तो लंग वीक डेफिनेटली. If the person is having frequent cough and cold with every season, person is suffering with a cough and cold, little like person eating ice cream, cold drinks, and immediately getting sneezing and the cough and cold, there is a lung deficiency. कहते हैं उसके उसमें आप हम डिस्कस करेंगे वेरी प्रोन टू कैच कफ एंड कोल्ड. जरा सा मौसम चेंज हुआ, सर्दी खांसी हो गई. तो अभी हम इतने सारे पैटर्न समझेंगे, इसमें करीब 14 पैटर्न वी विल 13-14 पैटर्न वी विल डिस्कस टोटल. Then in the 13-14 pattern, then you have to find out which pattern you are talking about. आप कौन से पैटर्न की बात कर रहे हो. तो अभी हमें स्टार्ट करने तो पहले, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा पैटर्न, आप किस पैटर्न की बात कर रहे हो. राइट. अभी आपको कैसे पता चलेगा. स्किन इशू भी हो सकता है डेफिनेटली. लंग ड्राइनेस में आई विल डिस्कस द ड्राई स्किन एंड ऑल टाइप ऑफ द लंग प्रॉब्लम माइट क्रिएट सम स्किन प्रॉब्लम. जिनको भी लंग की डेफिशिएंसी होती है, जो भी बच्चे लंग की डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं, जो भी बच्चे बोलते हैं 16-17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में कि मुझे हमेशा सर्दी खांसी हो जाती है या बनी रहती है, आप देखोगे कि कैसे उन 21-22 साल तक तो उनके बाल झड़ना चालू हो जाते हैं. 25 साल तक तो बहुत गैप हो जाता है, पेचेस बन जाते हैं. तो कैसे चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं वो हम समझेंगे आगे. राइट. हाउ द लंग डेफिशिएंसी अफेक्टिंग एवरीथिंग वी विल डिस्कस. ओके. तो अभी पहले पढ़ स्टार्ट तो करने दो निमिषा जी. अभी आपको पूरे 14 पैटर्न का भी निचोड़ निकाल देना है क्या. अभी निचोड़ देना है सारे 14 पैटर्न ऐसे. अभी बता दो कि कौन से पढ़, तो पहले चालू तो करने दो. पहले पहचानो कि पेशेंट आपके सामने बैठा है, सामने इसको लंग की डेफिशिएंसी है, कि लंग ड्राइनेस है, कि लंग इन डेफिशिएंसी है. पहले पहचानना तो सीखें हम, फिर हम प्रोटोकॉल तो तैयार है हमारे पास, है ना. प्रोटोकॉल डाल देना इसमें. ओके. सो डन फॉर टुडे. नाउ विल सी यू टुमारो. कल मिलते हैं. गुड नाइट. कल गुरुवार है लेकिन क्लास होगी. ठीक है. चलिए. गुड नाइट.